Thank you so much for joining us. Big applause for him. Well, we are in the second decade of the 21st century. And in this environment, when we keep on hearing about gender equality, we need to understand that you cannot have gender equality unless you free the woman from sexual servitude. Is the story of a girl who has unleashed the feminine desire, because it is not the male prerogative to touch the zenith of his desire. In the dawn of the 21st century, when we introduced Malika Sharawat with Murder and Bipasha Basu with Jism, we kept the woman caged within the parameters of the male desire. But this woman dares to walk out. This is this 21st century, second decade woman, and I'm very proud to say that we have invented very successfully this new persona in this film Khamoshiyan with the help of Karan Dara, the bright young director, and this very gifted writer, Vikram. And you will see now our audio-visual communication of a song which is already a hit. It is our title track, Khamoshiyan, which has become a rage, the music of silence. But what you have seen is a tame version of that. Now you'll see the version that we have created especially for you. And this will represent the core of the film. And we have hidden it. As I say, you are what you hide. But on forums like this, we don't hide anything. So we will now show you that song, Khamoshiyan, which has the essence of what Khamoshiyan, the film, is all about. May I please request all of you all to be seated? Congratulations, Sapna. You were looking very seductive. Yeah. Yeah. You looked really sexy, bold, and very nice. Thank you. Yeah. Can I have who could ignite and satisfy the sexual, what you call it, feminine desire? Feminine desire. I take back my word. Feminine desire. Well, I'd rather just have both. Is that okay? I don't know. You were doing the scenes. Well, I think both of them together. Very nice. To get together? We want everything. Take over the world.
Huh? Take over the world and everything and capture everything, especially every man. Done है. ओह माय गॉड एक्चुअली ये इस बारे में मैंने सोचा है बहुत पहले और अभी ये सब देख के तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि रात को जब आवाज़ आएगी चिल्लाने की मेरे रोने की तो समझिएगा कि देवीना से मैं मार खा रहा हूँ पहले तो अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो हाँ एक्चुअली खामोशी है तो ना ही करे तो अच्छा है नहीं तो हाँ सब कुछ बाहर जो राज है वो बाहर आ जाएंगे तो नहीं बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है और ख़ासकर आप सबके सामने तो बताना भी नहीं चाहिए नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए और क्या चाहिए अगर आपको लॉन्च इस बैनर से मिलता है तो बहुत बड़ी बात है और हमेशा से सोचा है और मैं फ़ैन रहा हूँ सारे सॉन्ग्स जब भी मैं टीवी करता था और सब लोग बोलते थे कि गुरमीत फिल्म करना तो डेफिनेटली विशेष फिल्म के साथ करना क्योंकि उसके सारे गाने हिट होते हैं एंड मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा जो पहली फिल्म है जो लॉन्च है विशेष फिल्म के साथ रहा Mushia. Looking forward to start with a bang. And with a lot of lies. That's what we are here. Like Bhatt Saab said, you are what you hide. And we're hiding a lot of stuff. So it's all going to come out on the 30th. They know it. Yeah, I think everyone knows it. We all know it. There's something we're always hiding. I was wearing this stupid piece. But at the same time, I'm also lying. We're all lying. We're in the lying business right now. Yeah, and it's the way we'll glorify it and show you something very spectacular at the end of this month. So I'm looking forward to it and planning to start with a bang. Ask yourself, after you put your head on your pillow and you fall asleep, in those silences, what do you see? Is that what you reveal to the world? You don't have to ask me, you know the answer. So this film deals with that frequency that we all live with, but we project another person which goes about the day-to-day function, but deep within is a side which we seldom reveal. And if at all we do it in what is called very intimate relationship. So I think that is essentially the frame in which this story has been written by Vikram and directed by Karan. But it's an erotic thriller. And as I said, the 21st century embodiment of female Shakti form is here, that she's here. And she is the one who is going to step out of what is called the desire as defined by the men. Bhige Hot Tere was a song which kind of set the nation ablaze in the dawn of the 21st century. But that was essentially the Imran Hashmi construct. But here, it is Bhiglu. It is the woman who says, even I shall pursue carnal gratification on my terms, not as decided by the men. That's essentially what is different about this film. She is one person who doesn't listen. And that is why she has been cast in this film for what she is. Can you be coached, my dear? No, No. I do whatever I want. Sorry, you'll have to wait till 30th Jan. Thank you. My question is to you, Sapna. I just happened to read in the morning that you have great equations with Karan rather than the two leading actors. So could you just... And there was also a link-up word used in that. So how true is it? अरे हमें पता ही नहीं चला ये कहाँ से? Jealous, huh? You are what you hide. Yes. Well, Karan solves all my problems, and Karan helps me portray Meera, and that's my purpose in Khamoshia. So yes, over these two, So what have you two to say about it? Like, she's actually disowning you guys and just choosing a director. they're just tools. No, we're part of the whole organ. आपको नेक्स्ट इमरान हाशमी की जरूरत नहीं है, एक इमरान हाशमी काफी है। अच्छा। मगर ये गुरमीत है, अपनी पहचान अपना एक वजूद लेके आया है और इमरान हाशमी की ये
का जो ने जो स्पेस क्रिएट की है वो बहुत ही एक बड़ी स्पेस है। इसमें एक शुरुआत की है, हाँ टेलीविज़न के माध्यम में से इसने अपना एक दुनिया पे, विश्व पे एक अपना एक असर दिखाया है, मगर सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने भी प्रवेश किया है और यकीनन जिस किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उससे हम बहुत खुश हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो है आपके बीच में रहेंगे और आपका कैमरा इन्हें चेस करता रहेगा काफ़ी 10-20 सालों तक। यही तो चाहिए। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब भी गाड़ी में भी बैठो बस ये देखता रहता हूँ कि लड़कियों ने पहचाना कि नहीं। और बस ये है कि बस देवीना खुश होते रहे, ये मैं चाहता हूँ हमेशा। वो खुश है या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख रहे हैं मैं फंबल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। ओके सपना, 2 हीरो हैं, आप एक अकेली हीरोइन है इस फिल्म में, तो कंफर्टेबल हैं आप? क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल लग रही हूँ? ऑन द सेट एक्टिंग, रोमांस की बात कर रहा हूँ मैं, सीन्स। Do I look uncomfortable to you? यस, You like the word smooch, no? Smooch, 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 अच्छा क्या अभी smooch, ये तो smooch, smooch. Happy? ओके सपना, आप Smooch. Happy? अग्रेसिव क्यों हो रही है? हम तो सिर्फ एक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, रोमांस की भी बात कर रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे Acting दिखा तो हम अभी उसकी आपने बात कर बोला रहे हैं। नहीं. You just said smooch. मैंने एक्टिंग भी बोला, मैंने नहीं. रोमांस बोला, मैंने No. एक्टिंग बोला। You said smooch. डोंट से स्मूच। Okay, now this smooch thing is boring. अच्छा वी हैव किसी ने अभी कहा था कि हमारे म्यूजिकल टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं श्रीधर के होते हुए, तो बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ अंकित यहाँ पर हमारे साथ है। अंकित आइए ज़रा। अब अंकित आके ये जो इनको कमी का एक एहसास हो रहा था वो पूरी कर दे। ज़रा ऊपर आइए और गाना गा के सदा इन्हें, नहीं बिल्कुल गा के। शर्म हटा दे जो शब गिरा दे रातों में, डारता डा दरा रे दरा दरा रा रा, मैं उड़ता ना 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 ना, भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में, भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में, भीग लूं। थैंक यू, आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी अच्छे से लिरिक्स याद नहीं है, बट थैंक यू सो मच। Apart from the members of the media, we'd also like to thank Ankit Tiwari for joining us here this evening.